The world is moving at a really fast pace nowadays. All the new inventions and technological advancements have made man's life easier and faster than before. Inadvertently, all these changes have adversely affected human health globally. Heart diseases being the leading culprit amongst all diseases, leading to mortality and morbidity worldwide. According to WHO, cardiovascular diseases (CVD) ranks the #1 cause for death globally, taking 17.9 million lives every year. In India alone, 28.1% of total deaths annually were due to cardiovascular diseases. The numbers are rising every year. The prevalence of CVD rose from 13 lakh in 1990 to 28 lakhs in 2016. Haryana is a northern state in India, lying adjacent to the national capital, Delhi. Historically known to be an agrarian state, it's now a well-developed industrial state. Despite all the advancements, approximately 2.5 lakh people in Haryana die due to CVD annually. The treatment expenses for cardiovascular diseases in Indian private hospitals have surged over the years and has become unaffordable for common people. For patients who belong to the very low-income strata, these expensive treatments have almost made these facilities inaccessible to them. The government civil hospitals have proved to be of much help to these people in providing treatments for CVD at a reduced or almost nil cost. But the cardiology departments in government hospitals are not functioning in a full-fledged and well-equipped manner to address the huge demand. This is the scenario where Meditrina Hospitals, in association with Haryana Government, established a PPP model scheme, Meditrina Heart Center. ये जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का ये एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है और हमेशा इस और कहा जाता है कि ये चलना चाहिए और ये यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है और लोगों की ज़िंदगी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का इससे इमेज भी बढ़ा है, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि सिविल अस्पताल जो खाली MLR और छोटी मोटी ड्रेसिंग करने के लिए मशहूर माने जाते थे, वहाँ पर कैथ लैब भी खुलेगी, हार्ट सेंटर भी खुलेगा और इससे सारे इलाके में जहाँ जहाँ पर भी खोले हैं, अभी हमने 5 जगह पर खोली हैं ये कैथ लैब, 5 जगह पर दूर दूर से वहाँ पर मरीज आते हैं और बहुत कम दाम पर हम स्टंट डाल रहे हैं। बाजार में जो 1.5-2 लाख रुपए में डलता है, हम वो 46,000 रुपए में यहाँ पर डाल रहे हैं। Meditrina Hospitals have played a significant role within and outside India in delivering quality treatment and has emerged as a most affordable heart specialty hospital group in India. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आजकल पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का एक इतना अच्छा मिलन होता है कि जनता को विश्व स्तरीय सुविधाएं सरकारी रेटों पर या बहुत कम रेटों के ऊपर या निःशुल्क भी प्राप्त हो जाती हैं। इसी योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री जी की पहल से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सेंटर पूरे हरियाणा में स्थापित किए गए हैं, जिसमें मेडिट्रीना ग्रुप के सौजन्य से अम्बाला कैंट में स्थापित किया जाने वाला हार्ट सेंटर हरियाणा के सबसे पहले हार्ट सेंटर्स में है, जो सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को जो है कैटर कर चुका है अब तक, और विश्व स्तरीय सुविधाएं फ्री कैटेगरी के पेशेंट्स को बिल्कुल निःशुल्क तथा अन्य पेशेंट्स को बहुत कम रियायती दरों के ऊपर उपलब्ध करवा चुका है। और सेटिस्फेक्शन रेट भी यहाँ का बहुत अच्छा है और पेशेंट्स जो हैं। This private-public partnership in Haryana has enabled Meditrina Hospitals to provide quality treatment to low-income patients through heart centers established at Civil Hospitals. इसके स्वस्थ हार्ट सेंटर की वजह से आज मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। पहले भी एक बार छल्ला डला हुआ है, अब की बार भी दूसरा छल्ला डल रहा है। ठीक है,
अगर उससे पहले मैं प्राइवेट में कराता उसका खर्चा 2.5-3 लाख बन जाता, पर अब का मेरा खर्चा है फ्री हुआ है हार्ट सेंटर की वजह से। It was thought that the cardiology services was the need of the hour, as the rates for the cardiology services in the private sector was too high. There were various parties which were interested for this, and the Meditrina Hospital of Dr. Pratap, they came to the as the forefront for this project. Now what we are seeing is that quality services at affordable prices are being provided to the people of Haryana as well as to the other state. And the best thing is that the people, the common man does not need to wait much for such necessary emergency services. The government provides infrastructure, water and electricity, whereas Meditrina provides medical equipment, doctors and staff so that these centers are managed by Meditrina Hospitals. अभी तक हमने 4 हेल्थ सेंटर, हार्ट हेल्थ सेंटर खोले हैं, जो कि पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव में स्थित हैं। और भी हॉस्पिटल्स के अंदर हमारी प्लानिंग है कि हम इनको खोलें, और ये अभी तक पीपीपी मोड पे हमने शुरू किए हैं, और इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमारे रेट जो हैं बहुत कम है, और इसमें बीपीएल जो पेशेंट है, एससी पेशेंट है, उनको फ्री इलाज होता है। यहाँ पे क्वालिटी के मुकाबले में हम कह सकते हैं कि जो पेशेंट सबसे अच्छे जो माने जाते हैं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, वहाँ जैसा क्वालिटी मिलता है वैसे ही क्वालिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं, और उसमें भी जो प्राइस होता है हमारा वो बहुत ही कम होता है। तो पेशेंट काफ़ी खुश हैं इस अस्पताल के खुलने से, और यहाँ पे इलाज पाके वो जब भी कोई आता है यहाँ पे तो अपने साथ साथ अपने सभी रिलेटिव्स को और सबको यहाँ पे लेके आता है। The Heart Center is functional in the Civil Hospitals of Haryana's districts, namely Faridabad, Ambala, Panchkula and Gurgaon. It has US FDA approved state-of-the-art Cath Lab, 10 to 20 bedded fully equipped ICCU with monitors, ventilators and defibrillators, and a fully functional air-conditioned OPD with facilities for treadmill test, echocardiogram and Holter. This center has well-qualified cardiologists, medical officers, nurses, paramedical staff, echo and cath lab technicians and well-qualified administrators. In a span of 1.5 years, we deal with all complex and as well as simple complex as well as cases which are rejected by other organizations. We are operating at very nominal rates, like we are charging just 46,000 for an angioplasty and 3,200 for an angiography. Dual chamber MRI compatible pacemakers we are deploying at around 1,10,000, which is far cheap as compared to any other private center, as well as government setups like PGI and All India Institute of Medical Science. Dr. N. Pratap Kumar, hailing from Kerala, is a well-known interventional cardiologist both in India as well as outside India. To his credit, he has done more than 15,000 angioplasties, among which 40% were complex angioplasties. He is a teacher for many and has trained more than 60 interventional cardiologists over this time. He has headed many units inside and outside India. He is well known for a complex CTO procedure. He is renowned in the field of left main angioplasty, C2 intervention and imaging. He has initiated the low-cost quality-driven angioplasties, which is for the first time in India lower than the Ayushman Bharat cost. नहीं, बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, प्यार से लेते हैं, प्यार से बोलते हैं, स्टाफ भी बड़ा अच्छा है। हाँ, अच्छा ट्रीटमेंट दिया है ना, कोई चार्ज नहीं लिया हमारे से। And in this last 2 years, we have done about 6,000 procedures. Out of this, we have done more than 2,400 angioplasties, more than 100 pacemakers, and other intervention procedures, including the peripheral vascular procedures. Over the last 3 years, Meditrina Hospital has provided cost-effective, efficient treatment for more than 2.5 lakh people and has done almost 30,000 cath lab procedures in the state of Haryana.
Cardiac care provided in the Civil Hospitals of Haryana is the dream of the Health Minister as well as the Health Department, which is fulfilled by Meditrina Group of Hospitals. We are happy to provide such a service in these centers, which make history in the country, and it will make an example for other states to follow. सभी जगह खोलनी चाहिए और हम अपने प्रदेश में भी और जगहों पर भी खोलने का हमारी प्लान है कि जिन जिलों में नहीं है उन जिलों में भी हम खोल पाएँ, हम यहाँ पर भी विचार करें।